people shouldn't be jealous of it. They should not try to put it down because this is what is everybody yearning for. आपने हर आदमी ने एक लेंस लगाया हुआ है हर चीज को परखने के लिए. मुझे समझ में नहीं आता कि आप एंटरटेनमेंट का लेंस क्यों नहीं लगाते. इस बात पे कंट्रोवर्सी होगी कि मैंने स्टेज के ऊपर अपनी बेटी का आलिंगन करके उसको एक प्यार से किस किया. कोई और अगर हीरो होता तो शायद ये होने भी नहीं देता और फिल्म इतनी चलती भी नहीं. दो इट्स अ स्पाई थ्रिलर, हमें पता है एक्शन है, बहुत कुछ हो रहा है, रियल लाइफ इंसिडेंट्स हम देख रहे हैं, 26/11 सब कुछ है, बट व्हेन यू अपीयर ऑन स्क्रीन पीपल हैव अ स्माइल, पीपल आर लाफिंग. I had a little tiff with not tiff, but I had a little sweet argument with Aditya Dhar on this. Right. अगर आपको बताऊं कि वो सेट कहाँ था तो आप सुन के दंग ही रह जाएंगे. Director's favorite. राकेश बेदी. Congratulations on that. In the age of revolving cinema, it's very hard to come across a film where each team's hard work is appearing in the frame out loud and clear. Yes, I am talking about Dhurandhar, the film that is talk of the nation, and today I am in conversation with the senior most cast member of the film, Mr. Rakesh Bedi. Sir, welcome to India TV. Thank you, dear. Thank you so much. Firstly, I want to know how are the reactions pouring in and how is the team taking that? About the team, I don't know, but reactions are pouring in like, oh, it's like an onslaught, like a tsunami, which I've never seen, never heard. पहले सुना करते थे कि कि मुगल आजम लगी है और किसी ने 10 बार देखी है, किसी ने 12 बार देखी है, किसी ने 20 बार देखी है, लेकिन ये आई नेवर हर्ड दैट समबडी people are seeing a 3.5 hour film in a week's time thrice or four Yes. times. Yes. So this kind of a frenzy for a film I have never seen. Because पहले क्या होता था कि एक फिल्म लगती थी तो साल साल चलती थी, 2 साल चलती थी, 3 साल चलती थी एक थिएटर पे. मेरी एक फिल्म थी एक दूजे के लिए, ran for 4 years. सो Right. उस 4 years में आप 6 बार आपने देखी तो बात समझ में आती है. लेकिन एक हफ्ते में आप अपना कीमती टाइम 3.5 घंटा निकाल के अगर आप जा रहे हो, और मैंने अभी डाला भी है उस पे, आई वाज ट्रैवलिंग इन द फ्लाइट एंड दिस जेंटलमैन केम टू This मी. fan came up, yes. या ही सेड सर आई हैव सीन इट थ्राइस एंड आई एम प्लानिंग टू सी इट फोर्थ टाइम इन अ I'm स्पैन too ऑफ. planning it to watch it twice. So it's a Right. great day for cinema. It should be celebrated in a big way. Right. And it should not be like people should not be jealous of it, or they should not try to put it down because this is what is everybody yearning for. Yeah. It's a yearning for years. You yearn for it, and then you really earn it. You know, it's maybe once in a lifetime thing which happens, and it should be celebrated. It should be respected, and it should not go to your head, to anybody's head. I mean, the makers, the actors, because ये यही एक चीज है जिसके लिए हर आदमी जिंदगी भर काम करता है कि ऐसा दिन मुझे देखने को मिले. Right. Like Right. for example, I got a call from Tanzania. A friend of mine owns a mall over there, and he has got 4 theaters in the mall. So he Right. called me up, I think after maybe 8-10 years. He said कि राकेश जी, मेरे मॉल में एक हफ्ते से चारों सिनेमा हर सीट फुल है, पहली बार ऐसा हो. And that is the craze of Dhurandhar. Yes, absolutely. Now that you mentioned sir pulling down, there were several controversies that happened around the release of the film. Press shows were cancelled, early reviews called it bore and a propaganda movie. Yami Gautam had to take it to her Instagram profile to put up a post regarding this. What do you have to say about this? Because there are several things that didn't reach to the audience. Will you like to put some light on that? See, I can't say much something about anybody's personal choice or dischoice or whatever you call it. किसी को एक चीज नहीं पसंद आती, किसी का बेंड ऑफ माइंड राइट की तरफ है तो वो राइट की तरफ देख रहा है. आपने हर आदमी ने एक लेंस लगाया हुआ है हर चीज को परखने के लिए. मुझे समझ में नहीं आता कि आप एंटरटेनमेंट का लेंस क्यों नहीं लगाते. Why are you putting on a lens of right or left or whatever? I mean, straight away, you just go to a film. It's a film. It's Right, saying something. You may agree with it, you may not agree with it. The matter ends over there. And right. बट सिनेमा की एक खास बात ये होती है कि जब फिल्म चलती है तो वो आपके सारे जितने उसके एंटी
जो थॉट्स होते हैं या जो लोग होते हैं जो उनको नहीं पसंद कर रहे, उनको वो धो डालती है। उनको उनको उनकी चॉइस मीनिंगलेस हो जाती है, क्योंकि कोई मतलब व्हाई, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? एक Right. जब 99.9% को जब एक चीज पसंद आ रही है, तो उसके अंदर फिर आप ये हाथ उठा के शोर, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये गलत है, ये गलत है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Right. Right. At the same time, so several reviewers came to the forefront and said कि हमें ट्रोल किया जा रहा है और हमें जो है death threats भी मिल रहे हैं. What do you have to say on that? If we look at the other side of the coin. आई हैव रियली नो आइडिया अबाउट इट, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। Right. कि पहली बार मैंने बात सुनी है जो आप बोल रहे हैं। और मुझे ऐसा क्यों मिलेगा किसी को डेथ थ्रेट? देखिए, मैं क्या बोलता हूँ, ये सारे के सारे ना एक इनिशियल रिएक्शन होते हैं। Right. ये अगर फ्राइडे को लगी है फिल्म, तो फ्राइडे रात तक के रिएक्शन है, एंड उसके बाद बात खत्म हो जाती है। और मैं आपको Right. मजे की बात बताऊं, जो मैं समझता हूँ, इतने साल से मैं काम कर रहा हूँ, अगर ये फिल्म फ्लॉप हो जाती, Yes. तो एक भी रिएक्शन नहीं आता। सब बोलते हैं वाह वाह, हम ना हम तो चाहते ही थे फ्लॉप हो जाएगी ना, हमको पता था फ्लॉप हो जाएगी, अरे इतनी गंदी फिल्म बनाओगे तो कैसे चलेगी? अभी क्योंकि चल रही है, क्योंकि लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं, तो Right. आप, तो लोगों को लगता है कि नहीं, मैं अगर आवाज उठाऊंगा तो मेरी आवाज जो है वो दूर तक जाएगी, या कोई ना कोई मेरी तरफ देखेगा। बेसिकली आजकल प्रॉब्लम यह है कि हर आदमी को, अभी मैं कहीं इंटरव्यू दे रहा था आपसे पहले, किसी जी. अखबार को इंटरव्यू दे रहा था, जी. तो इस बात पे कंट्रोवर्सी हो गई कि मैंने स्टेज के ऊपर अपनी बेटी का आलिंगन करके उसको एक प्यार से किस किया। वो तो मैं रोज ही Yes. करता था शूटिंग पे। उसकी मैंने उसके साथ 25 दिन शूटिंग की। वो जब भी मेरे पास आती थी, लाइक अ डॉटर, शी इज Right. लेस देन हाफ माय एज। वो Age. वो Yes. जितनी बार आती थी, प्लेइंग माय डॉटर, आई एम प्लेइंग अ फादर, एवरी टाइम शी केम टू मी, शी गेव मी अ नाइस हग, हेलो डैड, हेलो पापा, बिकॉज़ वी वर डूइंग A father-daughter character on या screen. Yes. सो वही मैंने स्टेज पर किया। अब वो दिखाई दिया लोगों को, तो आप उसके ऊपर कंट्रोवर्सी बना लो। Right. Right. So I would like to take you back to July 2024 when for the first time Aditya Dhar came up with this collage, black and white collage with the cast of Dhurandhar. हमें title नहीं पता था, हमें plot नहीं पता था, but just by the cast of it, people were enticed. People were really interested that this looks like something, in a making, a huge. We didn't know it was this huge. Now that we have witnessed the magic of Dhurandhar, we know that it's very, very intense, gripping. 3.5 hours didn't feel like 3.5 hours, but just for the sake of it, the collage was very enticing. I want to know your reaction when you came up with when the makers came to you with the story and when you got to know that these people are signing the film. Firstly, who was signed first, and when you got, okay, these people are also on board, what was your reaction to it? How did the cast react with the cast? This is a reaction which is more orchestrated or enjoyed, I will say, by the common audience. Yes, yes. As far the fraternity is concerned, it doesn't make any much of a ripple to us. I'm happy Right. that I'm part of this film, and I'm working with such good actors. And the matter ends over there. I'm not in awe of the cast. I'm not threatened by the cast. I'm not under any weight of the cast. And nobody is, like I'm saying, when I say I'm saying everybody. Yeah. Nobody is under anybody's weight, because everybody knows that if Sanjay Dutt is coming, you know, he's not going to eat up my role. Right, right, He's going to play his role, and he is going to do justice to his role. And in the process, I might get something good to do with him. right, Yeah, he's a big name, he's a big star, he has an aura. And so is with everybody. right. So nobody is under any threat from anybody, and nobody is awestruck also. No jaws are dropping as far as we are concerned. Right, right, right. I'm very glad that you mentioned nobody's eating on anyone's faces because this is a film which is being led by Ranveer Singh, but at the same time, everybody has a space to breathe in. Everybody has something or the other to show, and everybody is impressing everybody. I really want to say that out loud. But at the same time, few social media users claimed that eventually it became Akshay Khanna's film because he is the main villain. And Ranveer Singh ko backdrop mein hi rehna. It felt like, to me, Dhurandhar felt like a man's battle to reach to the finals. Dhurandhar 2 is the final match. But here he has cleared the semi-finals and has reached to the finals. Felt like that to me.
बट कुछ लोग हैं सर जिनका कहना है कि ओ दिस इवेंचुअली बिकेम अ अक्षय खन्ना मूवी, ओ ही वाज अ सील स्टीलर एंड ही स्टोल द लाइमलाइट, ऑल ऑफ दैट. Does the cast think it that way? What was your take, or did you have any conversations with Ranveer for that matter on this? Nobody is insecure at all. Let me tell you that. Right, right, If you see the film, I salute Ranveer Singh for the way he has handled himself in this film and presented himself. There are so many scenes. I mean, there must be around at least 40, 50 scenes where he is standing in the second row behind the right. character actors. Yes, yes, He is giving them space to breathe, space to perform, and perform as per the story and take the story forward. He right, is not coming in forward and trying to see anybody's limelight and say, no, 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 ye dialogue to mera, ye to main bolunga. He's not right. doing Yes, anything like that. So this speaks volumes of the confidence and the understanding of cinema of Ranveer Singh. कोई और अगर हीरो होता तो शायद ये होने भी नहीं देता और फिल्म इतनी चलती भी नहीं. उस फिल्म के चलने का रीजन ये है कि ही इज प्लेड हिज कैरेक्टर टू द हिट. द फर्स्ट पार्ट रिक्वायर्स Akshay Khanna to be so luminous. right. It requires, because if he is not that boisterous, his his skill in the end will become meaningless. Absolutely, absolutely on with it. So I want to know how was the prep for this film? आप लोगों ने workshops करी, because these are characters that really exist. This is based on an incredible true story as it arrives while the movie starts. I want to know the prep that went on. How did you prepare for the role of Jamil? देखिए बहुत सारे एक्टर ना झूठ बोल रहे हैं अपनी लाइफ में कि हमने बड़ी मेहनत की, बड़ी वर्कशॉप्स की. यू डोंट नो व्हाट आई हैव गॉन थ्रू. आई हैव गॉन थ्रू अ साइकोलॉजिकल बाथ एंड ऑल दैट jargon, लॉट ऑफ पीपल स्पीक. मैंने Yes, इसके लिए मैंने इसके लिए मेहनत की. मैं ये नहीं कह रहा मैंने मेहनत नहीं की, लेकिन मेरी मेहनत सारी इंटरनल थी. मैं right, जिस वक्त मैं शूटिंग कर रहा था, मैं उस समय भी मेहनत कर रहा था. right, मतलब मैं शूटिंग कर रहा हूँ, मेरा सीन आने में 2 घंटे हैं, तो मैं कहीं कोने में बैठा हूँ और मैं अपने सीन पे वर्क कर रहा हूँ कि मैं यहाँ. लेकिन मुझे किसी को दिखा नहीं रहा कि मैं वर्कशॉप कर रहा हूँ और मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ. और कोई भी किसी एक्टर ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि right. वर्कशॉप तब की जाती है जब सब अनाड़ी खिलाड़ी हों, सब नए हों. लेकिन अभी फॉर एग्जांपल अगर मुझे उसने लिया है, डायरेक्टर ने लिया है, आदित्य धर ने. आई हैव वर्कड विद हिम इन उरी. ही नोज मी. Yes, ही हैज सीन माय बॉडी ऑफ वर्क. ही हैज सीन. ही नोज दैट आई डू थिएटर कॉन्स्टेंटली around the I won't say clock, but round the month at least. I do theater. Last 50 years, I'm doing something or the other is yes, sir. always going on. So when he knows that वो किसके कंधे पे कितना भार डाल रहा है, Right, तो उसको वर्कशॉप करने की जरूरत नहीं है. किसी को भी वर्कशॉप करने की जरूरत नहीं है. या ऑफ कोर्स ये जरूर है कि देयर वर सम डिस्कशंस. right, देयर आर सम कि हाउ आई एम गोइंग टू अप्रोच अ सीन. How, what is my take, that how do I approach a scene? And if if I made some, like, I'll give you a small example. sure, I took out some videos of a lot of Pakistani politicians, right, and I wrote their transcripts. I heard them and I wrote them. Then I remembered them and I said them to myself in my phone's the sound mic. right, वो 2-2 2.5 2.5 मिनट के ऐसे बहुत सारे मैंने बनाए ट्रांसक्रिप्ट्स. तो मुझे पता करना था कि मैं किस भाषा में, किस कौन सी मुझे टोन मुझे सूट करेगी, पर्सनली सूट करेगी, जहां मेरा कंफर्ट लेवल भी हो और सीन भी खराब ना हो. right. And सो so, दैट talking of your tone, every time you appeared on the frame, people had a smile. Though it's a spy thriller, हमें पता है action है, बहुत कुछ हो रहा है, real life incidents हम देख रहे हैं, 26/11 सब कुछ है. But when you appear on screen, people have a smile, people are laughing. I had a little tiff with not tiff, but I had a little sweet argument with Aditya Dhar.
on this. Right. So I told him that let me do sprinkle a bit of humor. He said Right. नहीं सर बड़ी टेंस फिल्म है ये. मैंने कहा देखो ऐसा है कि मेरी ये प्रॉब्लम है कि मैंने बहुत ज्यादा कॉमिक जोन में काम किया है. तो जैसी Right. ऑडियंस मुझे देखेगी वो जरा सा एक्सपेक्ट करेगी कुछ ना कुछ तो राकेश बेदी टेबल पे लाएगा ही लाएगा जो थोड़ा लाइट हार्टेड हो. Absolutely. तो मुझे वो एरियाज ढूंढने दो. देन वी स्टार्टेड फाइंडिंग दोज एरियाज. वंस वी स्पॉटेड देम, देन आदित्य एंड मी बिकेम अ टीम Right. कि नहीं अब इसको मिलकर करते हैं कि हम कहाँ इस चीज को यूज कर सकते हैं कि उस कैरेक्टर का मैनेस जो है मैनेस, Right. ही इज वेरी मेनेसिंग. Mm-hmm. एक्चुअली ही इज वायलेंट. अगर आप देखा जाए तो सारी की सारी वायलेंस उस आदमी की ऑर्केस्ट्रेटेड है. Absolutely. वो खुद नहीं कर रहा है Absolutely. बट वो अपने घर बैठे बैठे पुलिंग द स्ट्रिंग्स. Yes. Yes. So he is menacing. But that in that menace, if I don't bring some kind of a wit, so it'll go, it won't work as well as it has worked now. Now, yes. तो फिर So मुझे क्या एक talking of, yeah. फिर मुझे एक एक वो क्या बोलते हैं एक स्टीरियोटाइप विलन की तरह काम करना पड़ता है. Mm. अरे मार डालो उसको, खत्म कर दो उसको, Mhm. जाने ना पाए. Right, right. Yes, yes. So talking of menacing, yes, you rightly pointed it out कि वो हर story कहीं ना कहीं जितनी भी चीजें हो रही है from Hamza's position strengthening in the film to Dakat being killed, everything is done by you. You are pulling the strings. What can we expect from your character from the sequel? Because people are really coming up with stories and theories. Will you like to share something? I know that several things are under the wrap, but still, would you like to point out something? I can only say one thing in one line that I'll be more menacing than what I am now. Right, right. So talking of रणवीर, आपका प्रोसेस जो है वो आउट एंड आउट हमने बहुत टाइम से देखा है बट रणवीर के हमने कई इंटरव्यूज में सुना है कि ही goes into a shell for 2 months and comes out as the character himself. Can you tell us about his transition from Ranveer to Jaskira to Hamza? What was his prep? He was absolutely 100% involved in the film all the time. All Right, the time. And after a long time, I saw this kind of a leading man of a film who was not only concerned and involved when he was shooting, he was also concerned and involved when he was not shooting and other actors were shooting. okay. Because he wanted to make sure that everything is like rightly being done. Or at times I had noticed that even after he had packed up from a day's shoot, he would not go back home to his room. Hmm. He would Hmm. stay on the set and he would help the direction team, the production team in conducting the further shoot, which was still left in the part of the day. Because he knew that this film is something very unique, very very unique. When we first heard the narration for the first time, and all of us heard it together, all of us, because the director said, I will not tell it, in isolation. कि कभी इसको ये सुना दिया फिर उसको सुना दिया. He said, I will narrate the whole film to every actor. जितने भी फिल्म में एक्टर आप देख रहे हैं, almost all the actors, all the HODs, all the script, the costume, the DOP, everybody, they were given one combined narration in a huge hall of a big hotel where everybody could be accommodated with the audio visual, not only Right. not only verbal but audio visual. मतलब जो आपने विजुअल देखे हैं फिल्म में उनके काफी करीब थे वो विजुअल्स. Okay. हालांकि वो बनाए हुए थे ऐसे ही लेकिन थे इसके लिए और नरेशन ओनली थे, लेकिन उस नरेशन के साथ वो पूरी फिल्म हमने देखी और उसको भी 3 घंटे लगे थे उस नरेशन को. Right, right. सर एक सेक्शन ऑफ सोशल मीडिया यूजर्स का ये मानना है कि दिस वाज एक्चुअली बीइंग मेड एज अ सीरीज क्योंकि इतना कंटेंट है इसमें इतनी सारी चीजें एंड देन इवेंचुअली पीपल डिसाइडेड द मेकर्स डिसाइडेड टू मेक इट इनटू 2 फिल्म्स. इज दैट ट्रू?
Can you clear the air? I don't think so. I never felt it. I Okay. never heard it. No, never, never. I think it was film, and they had lot of footage. So अगर इसको एक में खत्म कर देते तो लोगों को मजा भी नहीं आता, बहुत फास्ट Right. फास्ट Yes. जल्दी जल्दी हो जाता सब कुछ। फिल्म का जो ठहराव है, इस फिल्म का ठहराव जो है ना, ठहराव, Yes. that people are savoring every scene. Yes. You are enjoying it. The scenes are being seeped into the minds of the people. That is happening because फिल्म में एक ठहराव है। अगर एक फाइट हो रही है तो ये नहीं कि फटाफट फाइट की और आगे बढ़ गए और कहानी चालू कर दी। तो उसको Right. हर 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 एक्शन को, हर सीक्वेंस को प्रॉपर स्पेसिंग दी गई है, जगह दी गई है, ब्रीदिंग स्पेस दी गई है। Right. Right. So, other than performance and direction, one thing that people are absolutely loving in Dhurandhar is the music. How old songs have been recreated, and especially in the era where recreations are being hated. Dhurandhar is possibly one of the films जिसने बहुत से songs recreate किए हैं and are being loved with the modern music and lyrics, with the old touch. Everything is being loved. I want to know what is your favorite song from the film, and how was it when you heard it the album? आई थिंक मैं तो, क्योंकि मैं पुराने उसके, इन द सेंस वर्किंग अ लॉन्ग टाइम एंड आई एम ग्रेट फैन ऑफ म्यूजिक। मुझे लगता है जो जो कवाली उन्होंने इस्तेमाल की है ना, तो कारवां की तलाश है, दैट इज टू गुड। दैट इज वन ऑफ माय Right. फेवरेट कवालीज, इन इंडिया, इन बॉलीवुड म्यूजिक। दैट्स अ ग्रेट ग्रेट कवाली, ग्रेट कॉम्पोजिशन एंड फैंटास्टिक लवली लिरिक्स। वो मेरा Right. बहुत फेवरेट है। Okay. And so, speaking of the movie production, the locations, the real locations are amazing, but the set is massive and absolutely gripping. I don't know how to explain it to you, but felt like जब लियारी वाला scene शुरू होता है, it felt like we could smell the place just from the screen. It is that real. It looked that beautiful and eccentric. Can you tell us where was the film shot? वो set कहाँ पे बना था? Because it literally felt like you people infiltrated Pakistan to shoot the film in Pakistan. How was it for you people, and where was the movie shot? मैं अगर आपको बताऊं कि वो सेट कहाँ था तो आप सुन के दंग ही रह जाएंगे। Where वो was it? वो जो लियारी है, जहाँ शुरू में सारे मर्डर वगैरह होते हैं, जहाँ वो रेस्टोरेंट है जहाँ हमजा काम करता है, जिस Yes. घर में मैं जाता हूँ, जहाँ वो रह रहा है, Hmm. इट्स ऑल इन बैंकॉक। Nobody could have guessed it. Nobody could have guessed it. इट्स बैंकॉक। Was it like not possible to make it in Mumbai क्योंकि फिर उसकी videos viral हो जाते हैं or something, or was it a conscious decision by the makers? They got something like that location, they got something like that, and they knew that they could see it required a huge place, Right. which is in the middle of the city, at the same time not populated, Right. and there are crisscross lanes, like how there are streets in New York. The crisscross lanes, all in that place, huge lanes, long corridors with shops on both the sides. तो वो Right. पूरा उन्होंने शॉप लगाया था, एक एक शॉप लगाई थी। जब मैं वहां पर गया था, मैं दंग रह गया था कि ये किसी को पट्टी बांध के आंखों में वहां छोड़ दो, उसको लगेगा कि मैं किसी घेटो में आ गया हूँ, पाकिस्तान की किसी स्लम में आ गया, ऐसा लगेगा। Right. Right. And that is how it came across to us as well. I have to talk about Akshay Khanna. The man, the myth, the legend is what people have to say about him. Is he aware of the craze that he has caused online? Is he aware, or is he at his place in Alibag having his own gala time, unaware from all the buzz? How do I know, madam? I don't know that. You can ask him. How do I know? Uh, so, But I'm sure he must be having a gala time. Who doesn't like to own and enjoy the success? right, right. So is the team not yet planning a success party where people are gonna like see this is what we thought and uska hum fun देखेंगे? This is a rarest film I've seen in my life. It is the most expensive film I have done Right. in terms of the budget of the film, and it is least publicized.
Yes, absolutely, absolutely. लीस्ट पब्लिक, एक बैनर नहीं है, एक पार्टी नहीं है, एक अपीयरेंस नहीं है स्टेज के ऊपर, कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो फिल्म का मैजिक है बस। Yeah. क्या आपको भी लगा था जैसे लोगों को लगता है कि धुरंधर 2 की रिलीज बहुत लेट कर दी गई है? इट्स March 19, पीपल आर नॉट एबल टू कंट्रोल देमसेल्व्स. Will you pass on a message to the makers that can they prepone the film? I can pass, but I don't think it's going to work. Right, right. So is the Because film sir completely shot and was editing material? How is it? What's with the Dhurandhar 2? it's, I would say, ready. It's It's ready. absolutely ready. Okay, Maybe the last final touches are supposed to be done. But okay, अब एक्चुअली क्या है कि वो लास्ट का जो काम होता है ना, वो बहुत बड़ा काम होता है मैडम। जो टेबल वर्क होता है फिल्म के शूट करने के बाद, दैट्स अ मैसिव वर्क। उसमें right, कुछ वीएफएक्स भी होते हैं, कुछ लॉट ऑफ म्यूजिक, ये वो, तो बहुत टेक्निकल बहुत होता है उसके अंदर। तो उसमें दे डोंट वांट टू हरी अप विद दैट। right. But the shooting is completely done. या Okay. ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। So a quick rapid fire, I'll give you some situations and you have to tell me कि ये कौन से cast member पे ज्यादा suit करता है. Are you ready? बाप Very easy ones. Is there a mobile addict on set? इज देयर? Mobile addict, the one who's really connected to the phone. आई थिंक माय डॉटर। Sarah Arjun. या Okay, okay. The one that is never satisfied with the take. रणवीर। Ranveer, okay. Director's favorite. राकेश बेदी। Ah, congratulations on that. The one who likes to sit in his own corner and go through a silent motion to prepare for the scene. अक्षय खन्ना। Okay. The life on set. वेरी लाइवली, वेरी वेरी लाइवली, वेरी गुड। Okay. Thank you so much for your time, Rakesh sir. It was an honor talking to you. And we can't wait for Dhurandhar 2. So, firstly, congratulations on the success of the first part and all the best for the sequel. थैंक यू जी। Thank you, sir. Thank you so much.